Hello. Okay. Beta, good morning, all of you. Beta, determined we have started before last class. Sorry, we have completed the exercise one. Okay. One property just you note down on your or your new book. Okay. If any determinant is equal to a equal to k, then value of this determinant equal to, so k a की जगह we can change the name. Another determinant is equal to kb, then value of a equal to k to the power n into value of determinant of b. ठीक है, we have observed by taking some example, or in question you have seen there, है ना, so many question we have done in exercise 4.1. ठीक है, we have not used this relation, but we found that, ठीक है, in so many question, in question number 4.1 exercise third question, 2a equal to, है ना, this was the 2 over 2 by 2 matrix, then it becomes 2 to the power 2 equal to a matrix, that is 4a, है ना. This property we have not used that time. ठीक है, but we have verified by taking the determinants only. In the next question also, question number 4, that was 3a. So 3 is the value of k here, है ना. If we want to find out the determinant of this value, this will be equal to 3 to the power 3 into determinant of a, that is 27a. ठीक है, because this is the matrix of order 3 by 3. Here we have to take the value of n. N means order of the determinant. Order is, it is 2, then we will take in place of n is equal to 2. If order is 3, then we will take n is equal to 3. So you can use this relation. Generally it comes for 1 mark question. ठीक है, determinant of a equal to k to the power n b, where a is equal to kb. If we want to find out the value of determinant of a, then we can find out in this way. This relation we have not used in exercise 4.1, but we have done some question there, we can use also. ठीक है, but we have to verify this relation. For after verification we have found this is following in these question also. So just remember this relation. ठीक है. For now I am starting the next exercise, that is exercise 4.2. 4.2 के लिए I have told you that day also कि we have to use some properties. So some properties, these properties you have to remember also. ठीक है, just as we will check them how it is following. That value of any determinant. ठीक है, if we transpose, if we convert row into column or column into row, that is known as the transpose. The value of the determinant remains same. ठीक है, this is the property 1. ठीक है, क्या property है? If we change row into column and column into rows, then the value of the determinant remains same. So we can verify it also. Some taking example. Suppose if we take the example a equal to 1 0 1, ठीक है, 2 1 5 1 2 3. ठीक है, I am just taking the any determinant, whatever you want to take. ठीक है. Now you find the value of this determinant a equal to, which will be equal to, if we calculate this one 1, and now you have familiar with how we have to solve. We delete the first row and first column, then we get 1 5 2 3, and then 0 आ रहा है तो 0 की वैल्यू, है ना. We take the position -1 to the power, this is the position 1 2, we use the power in power lower suffix. Lower suffix is 1 plus 2, that will be negative. -1 to the power 3 will be -1. So just I have put here -1. The value of
anything, if we multiply with 0, then it becomes 0. Now I am just writing the last one, that is 1, which is equal to 2, 1 and 1, 2. Now you can find the value of this 3 minus के 10, that is equal to minus 7. It is 0. Now come here, plus 2 to the 4, 4 minus 1, that is 3, it is equal to minus 4. Okay, now we have calculated the value of determinant of A. Now we want to find out the value of determinant of transpose. Okay, transpose, if we do the transpose, if we are converting row into column, then it becomes 1, 0, 1, 2, 1, 5, 1, 2, 3 equal to, now we are expanding. So we can expand this column also. Okay, I have told you earlier, we can expand by any row or any column. Okay, it depends on you. If we take this row also, we can take this column also. If we expand with this row, so suppose we are expanding with this row, so we have to take 0. Okay, 0 के साथ we will take, or deleting the first, second row and first column, we will get 2, 1, 1, 2, 2, 1, 1, 2. Similarly, if we get here minus 1, if we expand this way, it becomes 1, 1, and 1, 3. And last one, that is 2 plus 2 equal to, we are expanding, okay, with respect to second row. Second row में, if we are deleting, we are expanding, we are finding the value of this position. Okay, we will delete the second row and third column. Then it becomes 1, 2, 1, 5. 1, 2, 1, 5. The value of this determinant will be, this is the 0 से multiply करेंगे, so we will get 0. Minus 1, 3 minus 1. 3 minus 1 equal to 2. 2 if we multiply with minus 1, so it is equal to minus 2. So 5 minus 2, 5 minus 2 is equal to minus 3, or 3 to the plus 6, sorry, equal to 4. 5 minus 2, that is 3, 3 to the 6. 6 minus 2 equal to 4. It should be also 4. Plus 4, there is some mistake in calculation, just I am rechecking. 1 if we are taking 1, 5, 2, 3. Okay, 1, 5, 2, 3, 3, 5 to the 10. 3 minus 10 minus 7. It becomes 0 plus 1. If we are taking 1, so 2 to the 4, 4 minus 1, that is equal to 3. So 3 plus 3 aa raha hai, that is plus 3. Okay, now we have transposed this determinant. So 1, 0, 1, 2, 1, 5, 1, 2, 3. If we multiply, we are taking the second row. Okay, second row, we are taking the position of this, sorry, the position of this one, this is the element which is second row and second column. So this will be positive, sorry. This will be plus 1, second row. Or this one term, this will be negative. This is the position is second row and third column. So I have not take care of this with the sign of with the position. Minus 1 to the power, we will take 4. Here we will take minus 1 to the power 5. So this will be minus 5, minus 2. Minus 2 say we multiply, we will get here plus and here minus. This is equal to minus 4. So what we have observed here, if we interchange row into column and column into row, the value of the determinant remains same. यानी कि value of determinant
remain unchanged. ठीक है, this is the first property. The first property they have given, the value of the determinant remains unchanged if its row and column are interchanged. ठीक है, you have to remember this property. Whenever we will start solving the question, we will use it. Now we will take the next property. Okay, next property में we just take this example only. इसमें क्या है, if we change inter rows, if we interchange any two row or any two column, ठीक है, we have solved this one, है ना, this the value of this determinant is equal to, just I am just writing this one, 1 3 minus के tan और प्लस 1 4 माइनस के 1, यानी कि कितना हो गया, -7 प्लस 4 -7 प्लस 3, यानी कि -4 होगी. तो ये वी हैव टेकन दिस डिटरमिनेंट ए. ठीक है, इफ वी इंटरचेंज एनी टू रो, अगर हम किसी दो रो को इंटरचेंज करते हैं, द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट इज चेंज विद माइनस साइन. साइन उसका चेंज हो जाएगा, यानी कि आई एम जस्ट चेंजिंग द टू रोज. ये जो हमने जो लिया है, इसका नाम हम दूसरा डिटरमिनेंट रख देते हैं, दैट इज इक्वल टू बी. यानी कि बी इज द डिटरमिनेंट वी आर गेटिंग ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग एनी टू रो. कोई सी भी रो को हम इंटरचेंज कर सकते हैं. ठीक है, आपके ऊपर डिपेंड करता है. कोई सी भी रो को अगर हम इंटरचेंज करते हैं या एनी टू कॉलम को इंटरचेंज करते हैं, सपोज इस कॉलम को इससे हम इंटरचेंज कर रहे हैं, ये C1 है, ये C2 है. C1 C2 को हम इंटरचेंज करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये दिस विल बी 0 1 2, दिस इज 1 2 1 1 5 3. Now we are going to find out the value of this determinant. If we calculate the value of this determinant, this first term is 0, second is -1. ठीक है, if we delete the element 1 5 2 3 1 5 2 3, ठीक है, last one is +1 1 2 2 1 1 2 2 1. ठीक है, so this to be the value of this determinant is equal to -1 3 minus के tan प्लस 1 1 minus 4. ये +7 है और ये -3 है, इट इज इक्वल टू 4. ठीक है, 3 minus 10 -7 4. नाउ इफ वी इंटरचेंज एनी टू रो, if we interchange any row, ठीक है, two rows are two columns, we have interchanged the two columns C1 C2 को we have interchanged, then the determinant of the this becomes +4. so it is changed by minus sign. ठीक है, अगर हम किसी भी दो रो को या दो कॉलम को इंटरचेंज करते हैं, द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट चेंज विद माइनस साइन. दिस इज द सेकंड प्रॉपर्टी. ठीक है, फर्स्ट प्रॉपर्टी में ये जस्ट आई हैव टोल्ड यू, ट्रांसपोज करने में कोई फर्क नहीं पड़ता, पूरी अगर हम सारे रो और सारे कॉलम को इंटरचेंज करते हैं. मगर इफ वी इंटरचेंज एनी टू रो और एनी टू कॉलम, देन द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट चेंज बाय विद माइनस साइन. ठीक है, दिस इज द सेकंड प्रॉपर्टी. Now just take, just I am rubbing this board, है ना. Now third property is what? Third property is if we the any two row or any two column are identical, then the value of that determinant becomes 0. ठीक है, अगर कोई भी determinant की any two rows or two columns are identical है, the value of the determinant will be equal to 0. Just take some example. Any example you can take. ठीक है, if we take a equal to 1 2 5 0 1 3 0 1 3. ठीक है, देखो I am just taking the second row और third row are exactly equal.
R2 और R3 क्या है, एग्जैक्टली इक्वल है, देन द वैल्यू ऑफ दिस डिटरमिनेंट विल बी 0. नाउ यू कैन वेरीफाई दिस वन. इफ वी फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस डिटरमिनेंट a इक्वल टू, इफ वी एक्सपेंड विथ, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग अगर मैं फर्स्ट कॉलम के अकॉर्डिंग ही एक्सपेंड करता हूँ तो क्या होगा, दिस इज इक्वल टू 1 3 1 3, द अदर टर्म्स आर विल बी इक्वल टू 0. तो 3 माइनस 3 इट इज इक्वल टू 0. देखो, ठीक है, कोई भी डिटरमिनेंट अगर हम लेते हैं, दो रो और टू कॉलम्स, either two row or two columns are identical, then the value of the determinant becomes 0. You can take any example. ठीक है, अगर मैं इसको चेंज कर दें, सपोज करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. ठीक है, उसकी वैल्यू हमेशा 0 ही आएगी. देखो और एग्जाम्पल और ले लेते हैं. इसको मैंने सपोज करो 1 2 5 कर दिया. अगर आपको ये लग रहा है हमने 1 2 5, इसको फर्स्ट रो को फर्स्ट थर्ड कॉलम रो को हमने इक्वल कर दिया, देन इफ वी एक्सपेंड विद दिस, है ना, अगर मैं इसको एक्सपेंड करता हूँ फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग कर लेते हैं, कोई बात नहीं, फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग करते हैं तो 1 3 2 5 -2, इसको एक्सपेंड करते हैं 0 3 1 5 -5 0 3 1 5. ठीक है, ये हमने एक्सपेरिमेंट सीखा होगा. यहाँ पर अब इसको एक्सपेंड करते हैं, वी आर एक्सपेंडिंग दिस वन, 5 माइनस के 6 -2 0 -3 -5 0 -3. it is how much, it is -1 -3 into -2 plus 6 or plus 15. 3 5 is 15, it is coming different value, it should be equal to 0. We have expanding with the first 1 2 5, we have taken this element, we have taken 1 3 2 5 first row, then -2 0 3 1 5, then ये प्लस का है बेटा, +5. now we have deleted 0 1 0 1 आएगा, सॉरी, है ना, we delete this position of that row and column. ठीक है, 0 1 and 1 2. 0, if we delete the first row and third column, we will get 0 1 and 1 2. ठीक है, -2 0 -3 plus 5 0 -1. It is equal to -1, it is equal to +6, it is equal to -5. ठीक है, -5 if we are taking, it is equal to 0, -6 or +6. So I have taken the two examples, है ना. First we have made the second row and third row identical. Now I have made the first row and third row identical. After expanding, we are observing that the value of the determinant is coming 0. It means if we take either two row or two column identical, then the determinant of the value of the determinant becomes 0. This is the property third. Now we are taking the next property, that is property 4. If each element of a row of a determinant is multiplied by a constant k, then the value of the gets multiplied by k. K means any number. If you multiply by, just I am taking the example. Suppose any determinant you have, this one, whose element are 1 2 3 5, ले लो, कुछ भी ले लो, 0 -1 1 3 1 2. ठीक है, ये कोई डिटरमिनेंट है. इफ वी मल्टीप्लाई,
तो ये डिटरमिनेंट है, डिटरमिनेंट के लिए हम जो है पहला लाइन का यूज करते हैं, ठीक है। तो पहला लाइन को आप ऐसे शुरू करते हैं इस तरीके से, otherwise it will become matrix if we multiply any element, any row, ठीक है, ठीक है। सपोज करो इसका नाम हमने क्या रख दिया, बी, इट इज another determinant b whose each element को we are multiplying by, सपोज करो 2, 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 2 प्लस इंटू 4 10, इट इज इक्वल टू 0 माइनस 1 1 3 1 2। तो ये प्रॉपर्टी क्या कहती है, इफ यू आर मल्टीप्लाइंग बाय एनी रो और एनी कॉलम, the value of the determinant तो हम हर किसी को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 दी पावर 3 यानी 10, इट विल बी इक्वल टू 8 टाइम्स। समझ में आ रहा है? अब इसको हम वेरीफाई करते हैं, तो इसकी हम पहले डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं। डिटरमिनेंट ऑफ ए 1, ठीक है, माइनस 1 1 1 2 माइनस 2 0 1 3 2 then plus 5 0 1 0 minus 1 3 1। The value of this determinant is equal to minus 2 and minus 1 minus 2 0 minus 3 plus 5 0 plus 3, यानी कि इट इज इक्वल टू माइनस 3, ठीक है, प्लस 6 और 3, यानी कि कितना हो गया, ये हो गया आपका 18। यानी कि इसकी डिटरमिनेंट की वैल्यू जो आ रही है वो 18 आ रही है, यानी कि डिटरमिनेंट ऑफ बी की वैल्यू जो आनी चाहिए वो 36 आनी चाहिए, है ना, 2 ट्वाइस में आनी चाहिए। So now we are going to calculating the value of b. So value of determinant b will be equal to 2. We are deleting minus 1 1 1 2 and minus 4, minus 4 से we are multiplying 0 1 3 2 minus 10 plus 10, sorry, it is equal to 0 1 3 2. Now we are expanding this one, minus 2 minus 1 minus 4 0 minus 3 plus 10 0 minus 3, ठीक है, 0 minus 3, value of determinant b we are expanding the stack is 1 minus 1 1 1 2 minus 4 if we take 0 1 3 2 then we will take 10 में कितना आएगा, 0 minus 1, सॉरी ये minus 1 है, 0 minus 1 और 3 1 3 1 it means 0 minus plus 3 हो गया, यानी कि इट इज कमिंग minus 3 3 टू जब माइनस के 6 और प्लस के 4 3 जो 12 प्लस 30, यानी कि इट इज कमिंग 36, ठीक है। तो जस्ट वी हैव ऑब्जर्व्ड दैट the determinant of b now it is twice the value of determinant of a. So what is the property, if you multiply by any row or any column, ठीक है, by some constant, the value will be that times of the new determinant, ठीक है, जो न्यू डिटरमिनेंट, the value of the new determinant will be, ठीक है,
equal to k times of the value of the determinant that was the a. स्टार्टिंग जो अर्लियर डिटरमिनेंट था उसका उतना ही टाइम्स हो जाएगी. इफ वी आर मल्टीप्लाइंग बाई 2, ठीक है, तो जनरलाइजेशन वी कैन डू इन दिस वे. इफ वी आर मल्टीप्लाइंग बाई एनी कॉलम या एनी रो बाई के ए, ठीक है, तो the value of the determinant will be k times of new determinant. The k is the constant if you are multiplying by any row or any column. ठीक है, so you have to remember this one. Now this is the fourth property. Now we take the fifth one. The fifth property is if in determinant ठीक है, अगर किसी भी डिटरमिनेंट में सपोज ये expressed in 2 times is converted in 2 determinants. So value of the determinant will be remain same. यानी कि we are expressing this one, ठीक है, we are expressing in 2 determinants such that two zero one one zero one one zero and 1 2 3, ठीक है, प्लस 3 2 minus 3 0 1 2 1 0 3. बेटे हम क्या करेंगे, जो प्लस और प्लस वाला जो साइन है, इस साइन को हम अलग कर देंगे. मतलब हर टर्म के साथ वी आर राइटिंग ऑल द एलिमेंट्स विद द कॉमन विच वी हैव इन द कॉलम. ठीक है, वी calculating the first the value of these two determinants which plus 1 0 1 1 0. ठीक है, और now this one also plus 3. If we delete this one 1 2 0 3 minus 2 0 2 1 3 plus minus 3 0 1 1 0. ठीक है, now we are calculating the value of this determinant 2 3 minus के 0 minus 1 0 minus 2 plus 1 0 minus 1 plus 3 3 minus 0 and minus 2 0 minus 1 minus 3 0 minus 1. It is equal to 3 to the 6. ठीक है, now I am writing the value of this determinant here. It is equal to 6 and plus 3 and minus 1 और 3 3 is 9 और plus 2 और plus 3
3 to 5, 5 or 9, 14, 14 minus 1, 13, so 3, 16 or 22. So 22 the value is we express in two determinants. ठीक है? If we find directly of the value of this determinant, so you will also get the 22. Just we are going to check it. 5, 3 minus 2, 0, 1, 2, 1, 0, 3. ठीक है? If we check this one, it is equal to 5. We are directing 1, 2, 0, 3, minus 3, 0, 2, 1, 3, and minus 2, 0, 1, 1, 0. ठीक है? Now if you calculate this one, you will get the value of equal to 22. I am just writing here the value of this determinant 5, 3 minus के 0 यानी कि 5 3 जा 15, 0 minus के 2 plus 6, or it is equal to 0 minus 1 plus 2. It is equal to 23. So I think it should be 23, 6 or 3, 9, 9 on 18, 18 or 2, 20, 20, 23, 22. But it is coming 3 minus के 0, 15, 0 minus के 2, 3 जो 6, और minus 2, 0 minus 1 यानी कि plus 2, 23. It should be also 23. There is some mistake. ठीक है? You can check yourself. Now time is getting over. ठीक है? तो आप इसको कंप्लीट कर लेना. ये हमने 5 प्रॉपर्टीज आपको कंप्लीट किए हैं. ठीक है? रिमेनिंग जो प्रॉपर्टीज हैं वी विल डिस्कस टुमारो. ठीक है बेटा? तो इसको जो है आप इसको कंप्लीट, जैसे अभी टाइम है तो आई कैन कंटिन्यू विद द नेक्स्ट प्रॉपर्टी आल्सो. If know each element of any row column of a determinant, the equimultiples of corresponding element of row any row. चलो इसको वेरीफाई करने में टाइम लगेगा. How much time is left? I don't know. Sir, 2 or 3 minutes are left, sir. Okay, madam. Okay. Just unmute the student. If they want to ask any problem, they can ask. Okay. Otherwise, we are completing this one. We have finished this one. Next day we will discuss the next property. The property just I am telling you. ठीक है? R1 में we want to operate. ठीक है? We can add any row or any column by multiplying by, ठीक है, any constant. The value of the determinant remains same. थर्ड रो को किसी भी कांस्टेंट से इफ वी आर मल्टीप्लाइंग k की जगह इफ वी आर टेकिंग एलिमेंट 4 से मल्टीप्लाई करके इफ वी ऐड दिस वन, what will be the determinant? That will be a determinant is b. यानी कि if we are multiplying 4 3 या 12, 1 plus 12 कितना होगा? It will be 13. ठीक है? 4 से मल्टीप्लाई किया it is equal to 4, 4 2 जा 8, it is equal to 8. यानी कि 2 5 6 3 1 2. यानी कि value of both the determinants will be same. How is it possible? You can check this one. The first determinant, the value will be equal to 5 to the 10 minus 6, which is equal to 4. Now we are calculating the value of determinant b. Determinant of b की value हो जाएगी, that is equal to 13, 5 6 1 2 minus 4 2 6 3 2
plus 8, 2, 5, 3, 1. यानी कि it is equal to 13. 5 to the 10 minus 6 minus 4. 2 to the 4 minus k 3 6 is 18 plus 8. 2 minus k 15. 10 minus 6 4 यानी कि 52. 4 minus 18 minus के 14 प्लस के 56 और 2 माइनस के 13 तो माइनस के 104. ठीक है, विच इज इक्वल टू 6 to 8 5 5 10 माइनस 104 यानी कि विच इज इक्वल आल्सो इक्वल टू 4. है ना, वैल्यू रिमेन सेम. अगर हम किसी भी रो और या कॉलम को मल्टीप्लाई करके ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उसकी वैल्यू में किसी भी तरीके का कोई चेंज नहीं आता. पहले जो वैल्यू थी डिटरमिनेंट की दैट इज दैट द 4. नाउ आल्सो इट इज कमिंग इक्वल टू 4. ठीक है, तो वैल्यू सेम आ रही है इसमें. ठीक है, ये हमने ऑब्जर्व किया. तो ये ऑल द प्रॉपर्टीज आई हैव कंप्लीटेड. ठीक है, टुमारो वी विल डिस्कस द क्वेश्चन विच आर गिवन इन द योर एक्सरसाइज. ठीक है, थैंक यू बेटा, थैंक यू, हैव अ नाइस डे. Thank you, sir.